Hello students, today we are going to learn in this video about formal letter and its format. Formal letter means official letters. So you can see on your screen that I have already written that format and its points, because in the previous video I found that when I was writing the camera was continuously zooming. So I have already prepared it on the board, and in this video I will also give you some example of letter writing on this format and how can you write an effective and standard letter by using this format. Today we are going to learn it. So you will have to keep these points in your mind before we get the example of letter writing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिंदी में भी बता दूं कि आज हमारा इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर के लिखना जानेंगे। अब ये फॉर्मल लेटर जो लिखेंगे हम लोग उसको इस पैरामीटर में, इस फॉर्मेट में इनबिल्ट करेंगे जिससे कि वह एक स्टैंडर्ड लेटर दिखे और जिसे देखने के बाद यह पता चले कि हाँ, लिखने वाले के पास यह नॉलेज है कि एक ऑफिशियल लेटर को कैसे परफेक्टली लिखा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड गो on the format and discuss about it. First of all, the number 1 point, you can see the number 1, there is sender's address. It means the person who is going to write this letter or send this letter, he or she will have to write his or her address there on the top of the letter. From the left side, all these descriptions, all these points what I have mentioned in the format will be written from the left side and in the same line, straight same line, after leaving margin on the left side of the paper. So first of all, sender's address or the writer's address, but without name. You are not going to write the name of the writer. And second thing, for the students, you will have to also keep in mind that in this sender's address you are not going to give any clue about yourself. The address must be what the question is carrying, or the name what the question is given you. So question paper address and name given in the question will be the main point. You are not going to show any your identity in your sender's address. You can include email and phone number, but if it requires, these are not necessary. If they are required, you can put or you can write. तो पहले लाइन में हमने बताया कि जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, जो सेंडर है, उसका पता लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और उसमें स्टूडेंट्स अपना नाम या कोई भी अपने पते के बारे में कोई क्लू नहीं देंगे। साथ में क्वेश्चन पेपर पे जो एड्रेस दिया रहेगा और जो नाम दिया रहेगा आपको उसी को यूज करना होगा, नहीं तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं डेट। यू विल हैव टू राइट डेट बिलो द सेंडर्स एड्रेस, जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस बाय लीविंग अ लाइन। एक लाइन छोड़ करके आप डेट लिखते हैं और डेट को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने नीचे एग्जाम्पल ब्रैकेट में दिया है 20 अगस्त 2020। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं डेट को। इसके बाद थर्ड पॉइंट, वी राइट द रिसीविंग पर्सनस एड्रेस और द पर्सन टू whom you are going to write the letter with designation of that person. Designation means in the official letters, basically you write the letter to your principal, to the mayor of the municipal corporation, or to the manager of the factory or some institution. So these are the designation of this person. So you will have to mention the designation first and after that the address. फोर्थ पॉइंट चलने से पहले तीसरे पॉइंट को हम लोग जान लें कि तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे उस व्यक्ति का पता और उसका डेजिग्नेशन, वह किस पोस्ट पर है।
जिसको हम लोग ये पत्र लिखने जा रहे हैं, चाहे वो डेजिग्नेशन हो सकता है, वो प्रिंसिपल हो, वो कहीं का मैनेजर हो, वो एडिटर हो, वो मेयर हो, वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, तो ये डेजिग्नेशन है। और इसके बाद उसका एड्रेस हम लोग उसके नीचे मेंशन कर देते हैं। पहले टू लिख करके कॉमा दिया जाता था, कॉमा को हटा दिया गया, फिर टू भी हटा दिया गया। और यदि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू, यू कैन राइट टू above द रिसीविंग पर्सन एड्रेस विदाउट कॉमा, और नहीं तो हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, दैट विल बी बेस्ट। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। आफ्टर writing the address of the receiving person, you will have to mention the subject or the matter on which about which you are going to write this letter। तो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से संबंधित, कि आप किस चीज़ के बारे में उस पत्र को लिखने जा रहे हैं, तो उसे मेंशन करना होगा। फिफ्थ पॉइंट विल बी द सैल्यूटेशन, सच एज द रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सर और मैम, दीज आर द वर्ड्स कॉल्ड सैल्यूटेशन। तो हम लोग पांचवें पॉइंट में सैल्यूटेशन लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर करके, रिस्पेक्टेड मैम करके, या केवल सर या केवल मैम लिखते हैं। और एक चीज़ जान लें, पॉइंट फोर और पॉइंट फाइव में, पॉइंट फोर और फाइव अपने प्लेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी आप सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लिख सकते हैं या पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं, तो दोनों ही फॉर्मेट सही होते हैं। तो आप कहीं पर पाएंगे कि सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और मैंने इस वीडियो में बताया कि सैल्यूटेशन से ऊपर सब्जेक्ट लिखना, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दोनों ही जगह पर आप कहीं भी सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। Sixth point, that is the best and most important point, is the body of the letter. The body of the letter has divided into three paragraphs. First paragraph is going to give the introduction of the writer and the purpose of the letter writing. It means who are you and for what purpose you are going to write the letter, you are going to mention in the first paragraph. When the second paragraph will come, you will have to write the detailed explanation of the topic, or you will have to explain the topic about which you wanted to write this letter, and this will be in the second paragraph. And the third paragraph will be conclusion or the end point. In the third point, in third para, you are going to conclude your letter and end it. तो इस तरह से हम लोग पत्र का जो बॉडी होगा, वो मेन पार्ट होगा, लेटर का जो बॉडी होगा, उसको हम लोग तीन पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। पहला पैराग्राफ जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उसमें राइटर जो है अपना इंट्रोडक्शन और अपने पत्र लिखने के पर्पस को लिखेगा कि वह लेटर किस विषय में और किस पर्पस से लिख रहा है। दूसरा पैराग्राफ होगा जिसमें उस टॉपिक पर जिस पर आप पत्र लिखना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप लिखना चाहते हैं, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल देना होगा। और तीसरा पैराग्राफ जो होगा वो एंड करने वाला होगा, ये वाइंड अप करने वाला होगा, लेटर को खत्म करने वाला, ये समाप्ति की लाइन होगी। सेवेंथ पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सच एज योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, एटसेट्रा। यू कैन राइट दीज लाइन्स एज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो सातवां पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देने के साथ लेटर को वाइंड अप करते हैं या बंद करने की कोशिश करते हैं। एंड द एट पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट, यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द सेंडर and his or her signature, and if he is posing any designation, you will have to mention the designation too, and if there is no any designation, you will not mention the designation। तो 508वां पॉइंट जो सबसे लास्ट है, उसमें आप अपना नाम या आप अपना नाम नहीं, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया नाम है उसको मेंशन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और आपको कोई पोस्ट दिया गया हो कि आप इस पोस्ट पर हैं और उस पोस्ट पर रह करके आपको ये पत्र लिखना है, तो उस पोस्ट को डेजिग्नेशन को सबसे नीचे नाम सिग्नेचर के बाद पुट कर देते हैं। और इस तरह से यह आपका परफेक्ट फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग का। इस फॉर्मेट में आप अगर लेटर को लिखते हैं तो दैट लेटर विल बी स्टैंडर्ड एंड दैट लेटर विल गेट good marks in examination. You will bind the hand of the evaluator from reducing the marks, because this format is going to fulfill all the para of marking scheme. So according to marking scheme, you are going to get full marks if you are not going to commit any type of mistakes in your contents, grammatical mistakes or the mistakes of lines. In that situation, you can get full marks as mathematics in English writing section. So students, now this is the format, and I hope in such time you will be able to write all these details. So let me proceed
for the next work, that is I am going to give you example of letter writing. I have promised, so I am going to write a letter to show how can you use this format for writing your letters. So let me erase it first. This is once again, this is sender's address first, second part date, third part receiving person's address, fourth part subject of the letter, fifth part salutation, sixth part body, and body is divided into three parts. Introduce yourself and purpose of letter writing, second paragraph detail of the topic and detail of the topic in second, and third conclude or end. Seventh point will be complimentary closing such as yours faithfully, sincerely, and eighth point, that will be the last point, is the sender's address, name, signature and designation if he or she is posing. So these are the points. Once again I repeated, and now I'm going to erase it. So students, if I'm going to write a letter, there must be some question based on it, or what question I'm going to answer. So I'm not going to write the question, but I'm going to announce this question on which I'm going to write this answer. The question is, you are Mohan, a member of NGO whose name is Awaz. Write a letter to the editor for a public campaign to clean the river Yamuna. Once again, I am going to read this question. You are Mohan, a member of NGO which name is Awaz. You are going to write a letter to the editor for a public campaign to clean the river Yamuna. तो हम लोग इस लेटर में एक एनजीओ के मेंबर के रूप में इस पत्र को लिखेंगे जिसका नाम आवाज़ है, और हम लोग इस पत्र को एक एडिटर को लिख रहे हैं जिससे हम लोग मदद चाहते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, कैंपेन कराया जाए, जिससे कि यमुना के पानी को साफ़ किया जा सके, या यमुना के पानी को कैसे साफ़ रखा जाए, इसके बारे में हम लोग यह पत्र लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, और आप देखें हम लोग कैसे लिखते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना होगा, एड्रेस, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको लिखना होगा एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी मैं एक एड्रेस लिखता हूं, जैसे हमने लिखा फुलवरिया बरौनी बेगूसराय बिहार पिन 851112। तो दिस इज ओनली, नाउ दिस इज द सेंडर्स एड्रेस, मैंने एक एड्रेस मेंशन कर दिया। अब सेकेंड थिंग इसमें हमारा क्या आता है, डेट लिखना। तो हम लोग एक लाइन छोड़ करके यहाँ मेंशन करते हैं डेट, और डेट हमने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, सच एज 20 अगस्त 2020, एक लाइन मैंने छोड़ा, तो डेट हो गया 20 अगस्त 2020। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो आएगा वह रिसीवर का एड्रेस लिखा जाएगा डेजिग्नेशन के साथ। तो हमने एडिटर को पत्र लिखना है, तो टू हमने बोला था कि आप लिखना चाहें तो लिखें, कॉमा मत दें, या ना लिखना चाहें तो मत लिखें, तो हमने नहीं लिखा, एक लाइन छोड़ा, और आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग the editor
एडिटर को हमने लिखा किस न्यूज़पेपर के एडिटर को हमने लिखा? द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। और इसका एड्रेस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। पिन कुछ भी आपने लिख दिया जो आपको मन में आया, 00123। हमने एक रिसीवर्स के एड्रेस को एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट कर दिया। अब चौथा पॉइंट था हमारा सब्जेक्ट मेंशन करना। तो हमने लिखा सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में क्या है? नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना। क्लीन यमुना। तो हमने ये एक मूवमेंट चलाया है जिसमें लोगों का एक नीड है, आवश्यकता है, जिसमें यमुना नदी को सफाई की या यमुना नदी के पानी को साफ करने के लिए एक मूवमेंट चलाया जाए, स्टार्ट किया जाए। इसके बाद तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज salutation. Respected sir or madam, anyone may be editor, respected sir and madam. And now we are going to write body of the letter. So in the first para I have told that you are going to introduce yourself. So your body start from here. I am Mohan, one of the members of members लिखेंगे of NGO आवाज। ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक एनजीओ है आवाज जिसका मेंबर हूं, और आपके लेटर के राइटिंग में थ्रू द column of your most popular newspaper, your most popular newspaper through the column of your most popular newspaper, I want to so students, I will have to erase it, the above lines. I hope that in the time you are going to get the enough time to copy it. So let me erase.
the above lines. Next, I want to highlight, paragraph is continued, to highlight the deteriorating condition of river Yamuna. River Yamuna. So, I have already mentioned my introduction as well as purpose of letter writing. Now, I will have to start from the second paragraph. The second paragraph, before we start the second paragraph, let me erase this part too. In this second paragraph, I am going to explain the detail. The city of Delhi the city of Delhi is getting contaminated water. Contaminated. Contaminated water from river Yamuna. The residents are the residents are to be blamed to be blamed for this they pollute the river they pollute the river with garbage, sewage and filth. The river water is the river water is full of bacteria, plastic, chemicals, and other waste and other wastes.
other wastes. If or after that we can explain more. It is unfit for unfit for consumption. It is unfit for consumption. Second para is just going to explain the topic, and after that what is my conclusion and what I want to say. In third para I am going to clarify it. The second para has already explained that what is the main reason of writing the letter. In third para I am going to write my motto. The people have been, third para starts from here. The people have been demanding have been demanding a water treatment plant, a water treatment plant, treatment plant. The authorities have not, the authorities the authorities have not yet responded, yet responded to the responded to the repeated requests. बार बार रिक्वेस्ट किया गया. Repeated requests I request you I request you to highlight the problem in your newspaper and and arose arose. So students, I will have to erase the above part. I think in this time you must have written. Arose public interest. Continue this paragraph, please.
public interest. We all need to get, we all need to get together, together in order to, in order to get the plant, order to get the plant set up in the area, set up in the area. So this was the demand of the writer from the side of editor for this kindness complimentary end, for this kindness I shall always be thankful to you. And the next last part, let me erase it. The yours sincerely, Mohan. If you want signature and designation, member, Awaz. And this is your letter to the editor. Students, I hope that it's very easy and clear how can you put the letter in the format what I have provided, and at the same time I had already given an example too. So with the help of this example it will be very easy to understand and clear your doubt. In the next video, if you have any doubt you can write in the comment and I will try to solve your problem too. So those who like the video or those who are thinking